Yeah, consistency is so important in this format of the game where momentum truly is everything, and unfortunately momentum not going the way of Quetta Gladiators last night, Butch, but there was a lot to like about that performance. They dug themselves out of a 19-4 deficit in the power play and they posted a decent total in the end. Yeah, they managed 179. Good contributions from Mohamed Nawaz, Najibullah Zadran as well, and Umar Akmal, of course. You know, they've got some veterans in that middle order, and otherwise they just haven't been up to the task, but last night they managed to put a decent score on the board, and this is a very fast-scoring ground, the fastest in the entire HBL PSL. So it's somewhere where if you're going to be batting first, we've seen a lot of teams really favour batting first and then being able to defend, but here it's a lot more difficult to do that because chasing runs down seems to be the order of the day here in Islamabad. So look, there are one or two things to like about what Quetta are doing. Unfortunately, they've lost 5 on the bounce. Yeah. You know, that leaves you in big trouble. They could still have an outside chance of getting themselves through if they win 3 games out of 3. The form at the moment is that makes that very, very unlikely. And the one sort of bright spot for Karachi Kings, if we can look on the other side of the table, is, okay, they've played 8, they win 2, their net run rate is decent because, as Sina said, they've actually lost games by very, very slender margins. So their net run rate is among the best in the tournament. So if they manage to dig 2 wins, then they might find themselves with an outside chance of qualifying as well. So this is not a no-hopers game. It's still all to play for. Oh, it truly is do or die today for both of our sides. But Karachi Kings, they have struggled in a number of areas. But in today's numbers game package, there has been one bright spark that has been helpful for them in the power play. Let's have. And for a side that hasn't managed to win too many matches, take a look at Karachi Kings. They're actually top of the best economy in the power play at 7.81. And I think Sanamir, that has a lot to do with Mohamed Amir. Absolutely. The way he's bowling, the swing he's generating and the line and length he has been bowling at, what he has done really well, he has picked up wickets. And whenever you pick up wickets of the opposition, of course, then the net run rate, generally the runs goes down. And that's what he has done really well. He was very impressive, wasn't he, Mark Butcher? Yeah, and I guess the problem for Karachi Kings is what happens when he's out of the attack. I mean, you know, he's still a fantastic performer. He doesn't have the pace perhaps that he had in his youth, but he's incredibly skillful. He's able to surprise people with the short ball still, even though the pace is down a little bit from his prime. And he still has all of those competitive juices, doesn't he? Kind of, you get him in the battle and he's absolutely up for it. The massive issue for Karachi is as soon as he's out of the attack, they get pogoed everywhere, which is a major, major problem for them. He certainly was amazing. That was our numbers game for this evening. Well, from one of the stars of the Mohamed Amir, we look at the Quetta Gladiators, and let's take a little look at our star talk with Umar Akmal, who was unbelievable last night for the Quetta Gladiators. He caught up with Sikandar Bakht just before this. सबसे पहले तो कल की इनिंग्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद. जिस तरह से आपने खेला, थोड़ा सा बताएं कि माइंड में क्या चलता है एज अ बैटर. जब आप बाहर बैठा होता है काफी मैचेस में, सोच रहा होता है कि मैं अंदर जाऊं, मौका मिले तो मैं दिखाऊं अपने जोहर. तो कल की इनिंग्स किस माइंडसेट से गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सिकंदर भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि कल की जो इनिंग्स खेली है, लेकिन ये इनिंग्स मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोग मैच जीतते. और आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले 4 मैच में बाहर बैठा हुआ था और सोच रहा था, उस तरह की प्रैक्टिस कर रहा था. स्पेशली अपनी कोचिंग स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. अगर वो मैं बाहर भी बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं मैच बाहर बैठा हूँ, मेरी लुक आफ्टर नहीं कर रहे. जिस तरह की मैं प्रैक्टिस चाह रहा था वो मुझे वैसी प्रैक्टिस करवा रहे थे. किस तरह की प्रिपरेशन रखी है आपने? यानी जो ऑफ सीजन होता है तो क्या कुछ चीजें रूटीन क्या हिस्सा है आपकी जिससे अपने आप को रखते हैं इन, ताकि खेल सके किसी भी टीम में जब बुलाया जाए? रूटीन में यही है सिकंदर भाई. सालों में बड़ा टफ टाइम आया हुआ था मेरे पे, लेकिन उसमें मैं स्पेशली अल्लाह ताला के बाद अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया. स्पेशली अपनी वाइफ का, उसने ये कह लें कि मुझे प्रैक्टिस पे मुझे ज़बरदस्ती भेजती रही. समटाइम मैंने कहा कि यार मैंने नहीं जाना, मैंने खेल लिया बस जितना खेलना है. लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे एक चीज़ बोली कि नहीं, अभी आपने पहले खेला था, अपने लिए खेला था, फैमिली के लिए खेला था, अब आपने मेरे लिए खेलना है, बच्चों के लिए खेलना है. तो उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था.
आखिर में सवाल कि आपकी बैटिंग ऐसी है, फ्लेक्सिबिलिटी काफी, किसी नंबर पे भी आप खेल सकते हैं, लेकिन फिनिशर का रोल ज्यादा पहचाना जाता है और वही चीज शायद क्वेटा मिस कर रही है। टीम का इस वक्त क्या प्लान है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं? देखिए, अगर हम देखें तो ये 3 मैच अगर हम अच्छे नोट पे अगर हम लोग फिनिश करते हैं, अच्छी एवरेज से विन करते हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला हमारे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ आपको क्या लगता है कितने रन्स के ये स्क्वायर है, कितने यहाँ पे देखिए, इस जिस तरह opposition? का सबसे पहले तो इधर के ग्राउंड स्टाफ को मैं मुबारक देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह की विकेटें तैयार कर रहे हैं। यहाँ का क्राउड बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे तो सिकंदर भाई 200 भी सेफ नहीं है। अगर 200 मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 200 प्लस हो तो फिर दूसरी टीम हल्का सा सेफ हो सकती है। चलिए, गुड लक फॉर द मैच। थैंक यू। Something like that.